Good evening to everyone. So we are going to know about the hot work. Hot work. So what is hot work? You know very well. I don't need to tell you again and again. So you know, hot work. Hot work मतलब any operation involving open flame, heat, sparks, or hot surfaces, including welding, cutting, grinding, brazing, soldering, and sand blasting requires a hot work permit for safe operation. समझे? यानी hot work जो है any operation involving open flame, heat, spark or hot surface including welding, cutting, grinding, brazing, soldering and sandblasting. That is hot work. Okay. Now next. So hot work के अंदर मैन एक्टिविटीज़ क्या क्या आती हैं? तो मैन एक्टिविटीज़ है वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, सैंड ब्लास्टिंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग, हीटिंग एंड टॉर्चिंग भी होती है. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्या है. वॉट वेल्डिंग प्रोसेस आर कवर्ड अंडर हॉट वर्क? आर्क वेल्डिंग और MIG और TIG. ये वेल्डिंग के कुछ प्रकार हैं. व्हाट आर द मेन हैजार्डस ऑफ वेल्डिंग? मेन हैजार्डस क्या है वेल्डिंग की? वेल्डिंग फर्स्ट आ गया फायर एंड एक्सप्लोजन. सेकंड क्या हो गया? यूवी रेडिएशन. थर्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक शॉक. और क्या हो गया? सेवियर बर्न्स. अगला आ गया मेटल फम्स. अगला क्या आ गया? आई डैमेज. वेल्डिंग देखो एक नोट लगा बोलता हूँ मैं तुमको कि वेल्डिंग इमिट्स इंटेंस UV रेडिएशन दैट कैन बर्न स्किन एंड डैमेज आईज विद सेकेंड. ओके, लेट्स मूव फर्दर. वॉट कटिंग मेथड्स ऑल अंडर हॉट वर्क? मेटल कटिंग के कौन सी कैटेगरी है जो हॉट वर्क के अंदर आती है? ऑक्सी फ्यूल हो गया, ऑक्सी फ्यूल कटिंग एंड प्लाज्मा कटिंग. ओके. अगला कौन से हैजार्डस है किसके अंदर? कटिंग थर्मल कटिंग के अंदर. तो एक तो हो गया इंटेंस स्पार्क्स हो गया, एक्सट्रीम हीट हो गया, मेटल फम्स हो गया, फायर रिस्क हो गया, बर्न इंजरीज हो गया, UV रेडिएशन हो गया, स्पार्क्स कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर्स. समझे? डिफरेंस बिटवीन ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग. तो क्या क्या डिफरेंस है देखो. बोथ जॉइन मेटल्स क्या करते हैं? जॉइन मेटल को जॉइन करते हैं यूजिंग फिलर मेटल. ब्रेजिंग अकेयर्स अबव 45 डिग्री सेल्सियम और सोल्डरिंग अकेयर्स बिलो 45 डिग्री C. ओके. हजार्डस क्या क्या है किसके अंदर? ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के अंदर. डू यू नो? ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग. हीट एक्सपोजर हो गया एक तो. हीट एक्सपोजर हो गया. ठीक है. फायर रिस्क हो गया, मेटल डस्ट हो गया, टॉक्सिक फम्स हो गया, बर्न इंजरी हो गया, आई इरिटेशन हो गया और फ्लक्स केमिकल एंड
irritate skin and respiratory system. ग्राइंडिंग एंड अब्रेसिंग, कटिंग एंड वाटर, ऐसे तो ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है, एक अब्रेसिव कटिंग हो गया, एक यानी ग्राइंडिंग एंड अब्रेसिव कटिंग में क्या क्या हजार्डस है, व्हाट इट्स हजार्डस। एक हो गया देखो, मेटल ग्राइंडिंग यूजिंग अब्रेसिव व्हील्स एट हाई स्पीड टू रिमूव मटेरियल्स, ओके, हजार्डस है हाई स्पीड स्पार्क्स, हाई स्पीड स्पार्क्स। अगला है मेटल डस्ट, नेक्स्ट है नॉइज़, अगला है फ्लाइंग डेब्रीज, अगला है रोटेटिंग पार्ट्स, आई इंजरी, अगला स्पार्क्स कैन ट्रेवल अप टू 10 meters and ignite flammable materials, okay. What is sand blasting? Sand blasting, and what its most serious hazardous. Abrasive blasting using जो है compressed air with silica, sand, other abrasive to clean, repair surface. Most serious hazardous silica dust which can causes silicosis. A serious lung disease or respiratory protection is mandatory, okay. When are grooving and threading classified as hot work? तो when they produce, क्या करते प्रोड्यूस, स्पार्क्स और सिग्निफिकेंट हीट in oil and gas facilities, even minor spark producing, grooving or threading is classified as hot work due to flammable vapor risk, okay. Next, what are the other activities considered hot work? Considered as hot work, like heating operation होगा, एक तो heating operation, hot tapping, soldering, torching, flame cutting, thermal spraying, SPRAYING. सही है। अभी व्हाट इज हॉट वर्क डेंजर्स ओवरऑल, हॉट वर्क के अंदर डेंजर्स क्या आता है ओवरऑल? तो इट क्रिएट्स मल्टीपल हजार्डस सिमुल्टेनियसली, लगातार, फायर एंड एक्सप्लोजन, बर्न्स एंड हीट, फम्स एंड गैसेज, नॉइज exposure, UV radiation, electrical shock and dust particles, and hot work account for a majority of industrial fire and serious injuries, ठीक है। What causes fire and explosion hazardous during hot work? Spark, hot metal and slag. How far can spark travel and how long do they stay hot? Let's get to know. A spark can travel up to 35 feet and remain hot for several minutes. What precautions control fire and explosion risk? First one is remove combustibles. Keep extinguishers ready. Clear the area 35 feet. Use firewalls, cover flammables and check surroundings. Okay. What sources produce UV radiation during hot work? Electrical arc, flame cutting, plasma cutting and reflected UV. Okay. Why is UV radiation particularly dangerous? UV मतलब ultraviolet. It is invisible. क्या invisible है? It can't be seen or felt and causes instant damage with effect appearing within second. Okay. What health effect result from UV exposure?
arc eye, painful cornea, inflammation, temporary blindness, skin burns like severe sunburns, or cataracts, long-term lung clouding, and skin cancer from cumulative exposure. Immediate symptoms include eye pain, light sensitive, and tearing. Delayed effect include long-term vision and skin damage. Okay. Okay. Who needs UV protection during hot work? Everyone in work area, not just a welder. Okay. 3 classification of thermal burns. First degree redness pain, second degree blisters with swelling, third degree deep tissue damage. Okay. What causes burns during hot work? Hot metal, slag, and molten metal. What causes electrical hazardous during hot work? Faulty equipment होता है एक तो, damaged cables, wet conditions, and improper grounding. What injuries can electrical hazardous causes? Shock, electrocutions, potentially fatal burns and secondary injuries such as falls or trauma. Agala, how can electrical hazardous be controlled? Inspect equipment, use proper PPE, and maintain a dry work area. What toxic substances are found in welding cutting firms? Zinc, lead, cadmium, ozone, nitrogen, oxidizes carbon monoxide. What health effect result from firm exposure? Firm exposure, respiratory irritation, metal firm, fever and long-term organ lung damage. Control proper ventilation and respiratory protection. What dust hazards arise from hot work? Metal dust from grinding, cutting, silica dust from sandblasting, and general particulate matter. What are the health risks of dust exposure? Respiratory damage, silicosis, fatal disease, and eye injury. Control respiratory, eye protection, and dust control measures. Okay. What noise levels are produced by common hot work task? First one is grinding, that can be 95 to 11 dB. Cutting 90 to 110 dB. Sandblasting 100 to 120 dB. What are the effects of noise exposure? Temporary hearing loss, reversible. Permanent hearing loss, irreversible. And tinnitus and tinnitus, ringing in ears. Control hearing protections, reduced exposure time, and equipment maintenance. अभी अपन देखते हैं पर्पज ऑफ हॉट वर्क परमिट टू डॉक्यूमेंट वर्क डिटेल्स, आइडेंटिफाई हजार्डस, स्पेसिफाई कंट्रोल एंड डिफाइन द टाइम, एरिया ऑफ वर्क, covering risk assessment, safety measures, and authorization of the whole work. That's the purpose of hot work permit. Can hot work begin without permit approval? No. The permit must be approved by an authorized person before work starts. List 8 steps in the permit requirement process. First one, a complete application, risk assessment, safety checks, firewatch assigned, executioners ready, authorization approved, permit posted on site, close after work.
अगला वो must be checked during the pre-work inspection. Check area clear, ensure ventilation, extinguishers ready, PPE available, cover flammables, firewalls present, inspect equipment and permit posted. Hot work must never start without completing all inspection. What are the key duties of a firewatch? Monitor the area continuously. Watch for sparks, heat, have an extinguishers ready. Monitor for smoke. Stay during and after work and no alarm procedure. Report hazardous immediately. Maintain clear access and keep fire equipment accessible. How long must the firewatch remain after hot work is completed? 30 to 60 minutes. Post work. The area must never be left unattended while hot work is in progress. What PPE is required for hot work in general? Face shield, helmet, welding helmet, leather gloves, respiratory protection, safety suits, safety glasses, flame resistant clothing, welding harpoon and hearing protection. What PPE is specific to welding? Auto darkening helmet, welding gloves, welding jacket or leather boots. What PPE is specific to sandblasting? Full protective suit, hearing protections, air fit, respiratory eye protections. What PPE is specific grinding? Safety glasses, leather gloves, face shield and dust mask. What should be done in a fire emergency during hot work? Pull the alarm, evacuate and use an extinguishers only if it is safe to do so. Got it? What should be done in injury emergency? Provide first aid, call for help and stay calm. What training requirements apply to hot work operations? Training is mandatory. क्या है mandatory? For all operators, workers must be competent and certified, understand hazards and receive regular refresher training, follow safe practice and have training records kept with supervisor verification. No training means no work. What are the key takeaway hot work safety? Obtain a hot work permit, follow safety procedure, firewatch, never work alone, stop it unsafe, wear proper PPE, be aware of UV hazards, maintain equipment, report incidents, and remember that training is essential. Okay.